Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, today we will start the new chapter, unit number 12, that is matter. And today we will study about the matter and its states. Before this, I have already given you a complete introduction of this unit. So let's start the lecture. So my dear students, here you can see different things on the screen. So let's move forward towards an activity. So my dear students, now I will show you a few pictures और आपको मुझे बताना है कि did you ever think that all the things around you are matter? In what states matter exist? तो अब आप कुछ चीज़ों को देखें. Here are a few things. आपको आइसक्रीम नज़र आ रही है. Then there is juice and then here you can see boiling water. तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सब चीज़ें मैटर ही हैं? क्या इनकी कोई या ये क्या सब देखने में चीज़ें एक जैसी हैं, फील करने में एक जैसी हैं? नो, बिकॉज एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर, लेकिन मैटर मुख्तलिफ तरह का होता है. जैसे कि सम आर सॉलिड, जिनको आप टच कर सकते हैं और वो उनकी एक फिक्स्ड शेप होती है. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो वो जिस भी चीज़ में उनको डालो वो अपने कंटेनर की शेप ले लेती हैं, जैसे कि लिक्विड्स, पानी, जूसेस, मिल्क, दीज आर लिक्विड्स. तो इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती. और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको नज़र नहीं आती, लेकिन वो आपके इर्द गिर्द एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि गैसेस. हवा में मुख्तलिफ गैसेस जो हैं वो शामिल हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. इसी तरह जब आप पानी को उबालते हैं तो वो बुखारात यानी कि वाटर वेपर्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो कि गैस में तब्दील हो जाता है. तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मैटर की मुख्तलिफ स्टेट्स हैं या वो मुख्तलिफ अशकाल में पाया जाता है. तो आज हम मैटर के बारे में ही पढ़ेंगे और हम उसकी मुख्तलिफ स्टेट्स के बारे में भी जानेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेसन वी विल डिस्कस अबाउट मैटर एंड इट्स स्टेट्स. So let's quickly look at the Islamic perspective. He who created the heaven and the earth and all that is in between. So my dear students, अल्लाह ताला ने ही आसमान भी बनाया है, ज़मीन भी बनाई है, जन्नत भी बनाई है और तमाम चीज़ें जो उसके बीच में है वो भी अल्लाह ताला ने ही बनाई हैं. और जितनी भी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, everything is made up of matter. So my dear students, in today's lecture all the students will be able to identify matter and its states. So let's quickly move forward towards the pre-reading question. Are all the things around you look and feel the same? No, क्योंकि हमने अभी एक एक्टिविटी की, आपने पिक्चर्स कुछ देखी और जो सब चीज़ें आपके इर्द गिर्द हैं वो एक जैसी नहीं होती. ठीक है, जैसे कि कुछ चीज़ों को आप पी सकते हैं, कुछ को खा सकते हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो छूने पे जो है वो सख्त मालूम होती हैं, कुछ नरम मालूम होती हैं. तो हर चीज़ जो है वो सेम नहीं है. दे ऑल लुक एंड फील डिफरेंट. So my dear students, let's move forward towards the reading page. Quickly open page number 112 in your GK3 books. I hope all of you have opened the page. So my dear students, let's start the reading. So, matter. Matter. Everything around us is matter. The matter is anything that has mass and occupies space. So my dear students, कब से हम बोल रहे हैं मैटर मैटर, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैटर से बनी है. तो मैटर है क्या बेसिकली? मैटर एक ऐसी चीज़ है जिसका मास हो और वो स्पेस भी घेरे, यानी कि वो अपनी जगह भी ले. तो ऐसी चीज़ को हम मैटर कहते हैं. तो अब अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसमें मास क्या है? सो लेट्स हैव अ लुक. Mass of an object tells us how much matter it has. So my dear students, mass एक ऐसी चीज़ है कि उससे हमें ये पता चलता है कि एक चीज़ के अंदर कितना मैटर भरा हुआ है. So this is called mass. A measuring balance tells us about mass. So my dear students, this is the measuring balance. और ये हमें ये बताता है कि किस चीज़ के अंदर कितना mass है. For example, on this side you can see one popcorn and on the other side you can see two boxes of popcorn. So this means कि this side of the measuring balance has more matter in it. और इसमें कम मैटर है और कम मैटर की वजह यह है कि मास कम है इसके अंदर. Here are some examples of matter.
States of matter. Did you notice any difference between the objects in all three rows given on page number 112? Objects in each row represent one state of matter. The matter has three basic states that are solids, liquids and gases. So my dear students, हमने previous पेज नंबर 112 पे आपकी बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कुछ जो है वो लिक्विड्स हैं, कुछ गैसेस हैं, जो जैसे अब बलून के अंदर जब एयर को ब्लो करते हैं तो उसके अंदर गैस भर जाती है, तो आप देखें कि उसका कुछ वेट भी हो जाता है और वो स्पेस भी ज्यादा लेता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि गैसेस के अंदर भी मास मौजूद होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आइस एक एग्जाम्पल है कि ये सॉलिड स्टेट में है क्योंकि ये सख्त होती है और इसकी एक फिक्स्ड शेप होती है। देन अ चेयर, इट ऑल्सो हैज अ फिक्स्ड शेप। देन दिस ग्लास, ये जो ग्लास है ये कंटेनर तो सॉलिड है लेकिन जो इसके अंदर मिल्क प्रेजेंट है उसकी कोई शेप नहीं है। अगर आप इसको ग्लास में डालेंगे तो ये ग्लास की शेप ले लेगा, अगर आप इसे किसी प्लेट में डालेंगे तो ये प्लेट की शेप ले लेगा। सो लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। Then juices, these are liquids. Then air, that has many gases in it. Perfumes, ये भी aerosols जो होते हैं ये भी गैस होते हैं, इनको कंप्रेस करके बॉटल के अंदर भरा हुआ होता है। So my dear students, the states of matter are solid, liquid and gas. So matter की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं, solid, liquid and gas. Now let's move forward towards the practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, what you need to do is write down your name and your roll number and then write the names of the states. Okay? So this is water. This is wood. This is the cloud. This is pencil. This is milk and it is liquid and it is gas. So this is how you will complete it. Look at the picture and write the correct state of matter. So is it solid, liquid or gas? Liquid. Is it solid, liquid or gas? It is solid. Is this cloud solid, liquid or gas? It is gas because it is made up of water vapors. And then a cylinder. It is solid, liquid or gas. Inside it there is gas, so it has gas in it. So my dear students, this is how you will complete the worksheet. Pause the video and complete it. I hope everybody has finished it. Now we will move forward towards the evaluation. What do you understand by mass? It is amount of matter inside a thing. How we can measure mass of objects? Through a measuring balance. Very good. How many states of matter are there? Name them. 3, solid, liquid and gas. Very good. So my dear students, now let's move forward towards the homework. So for homework, you will do complete reading of section, this page. So you will list solid, liquid and gas in each picture. Okay? आपको हर picture को गौर से देखना है और फिर आपको बताना है इनमें से solid क्या चीज़ है, liquid क्या चीज़ है और gas कौन सी है. In each picture, there are 3 pictures given. Okay? So complete it and then you will do question number 1 from section number C. What is matter? You will do this question in your notebooks. Okay? You can also take help from your book. So my dear students, this is your homework and now we will move forward towards the wrap up. So what have we learned today? Today we learned that all things around us are matter because they occupy mass and space. So matter basically kya hai? Matter is anything that occupies space and has mass. And then we studied about the 3 states of matter: solid, liquid and gas. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. If you find any difficulty, you can re-watch the video and you can also take help from your elders. Thank you so much. Have a good day and Allah Hafiz.